ஹலோ, வெல்கம் பேக் டு another வீடியோ. ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா, ஃபயர் வாட்சர் அண்ட் ஸ்டாண்ட் பை மேன் மார்க் இன்டர்வியூ நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணோம் ஒரு பர்சனுக்கு. ஸோ அவர் மார்க் இன்டர்வியூ எப்படி பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில். ஸோ அவருக்கு வந்து கிளைண்ட் இன்டர்வியூ இருக்குது நெக்ஸ்ட் வீக். ஸோ கிளைண்ட் இன்டர்வியூவில் அரபி மோஸ்ட்டாக எடுக்க சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ அவருக்கு இங்கிலீஷில் நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் கொடுத்தோம். ஸோ அதை தான் பார்க்க போகிறீங்க. இந்தியன்ஸும் இருப்பாங்க. ஸோ இங்கிலீஷ், ஹிந்தி அதை வச்சு மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அரபி எடுத்தாங்கன்னா ஒன்லி வந்து இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் பேசுவாங்க. ஸோ நமக்கு அரபி தெரியாது. ஸோ அவர் எப்படி ஆன்சர் பண்ணுறாரு, இங்கிலீஷோட ஃப்ளூயன்சியை வந்து அவருக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கறதுக்கு இந்த மார்க் இன்டர்வியூ பண்ணோம். ஸோ எப்படி பண்ணுறாருன்னு பார்ப்போம் வாங்க. You will do gas test, right? Gas test, there will be a train pass here. Gas tank, but How much percentage need to be there? Eliel, yes. Yeah. Eliel, 2 0, but isa mahanga for. But you say you are working as a fire SDM for past 7 years, you have experience. I'm just saying you don't worry about anything, just relax yourself and say it right. Okay. Just think it and say it slowly. Yes, yes. First, stage meter check, flammable gas, distilled gas, Okay. and flammable gas. Okay. That is Also called oxygen. alien. Flammable gas, you said not. That is called alien. Okay, flammable gas, how much percent need to be there? Actually, this person are now not mine. I'm forget now. Yes. But I know before working. I know. Okay, it should be 0. Okay, what else you will check? First time. What else you will check than gas test? What are all the requirements you will fulfill in the hot work area? Fulfill? I'm not understanding. What you will check while going to hot work area? Except permit. Permit is okay. Okay. Area is okay. What else you will check? Hotel working time. Yeah. Before starting hot work. Check only, yeah? Outside there will be a welding activity. What you will check as a fire officer? Yes. Check any fire inverter first. Fire? Fire inverter have or not have. Extinguisher. Fire extinguisher need for hotel working. First, this is must be need. Okay. If any fire, this one. Okay. Then They cover this area for blood. with fire blanket. Fire. Okay. Then With fire. Okay. And remove fire any material. So okay. After that. after this holding cable, check first leakage or damage anything. Okay. Then Anything. And need fire watch here should be neat. yeah, that's why you are there. Then Minimum need fire watch. And verification fire barricade and instead of permit also check permit hotel permit won't you use fire water leak, fire hose, fire water hose? fire transport. You will use it or not? Use it. Then you did why you will sell it. Fire water. You will use fire. Do we need fire water leak in the hot work area or not? Fire extinguisher Okay. must be neat use. Okay. Then after that, as a fire watcher, what are all the equipments you need in the hot work area? Hot area fire any I don't understand. Sometimes English I not understand. As a fire watcher, what are all the requirements you need to What? fulfill in the hot work area? Water well. What are all the requirements you need to fulfill in the hot work area? Some right. Your question is to In okay. confined space. First time excuse meter check any first time check excuse gas or oxygen first by excuse meter. Okay, after that, After everything is okay, gas, oxygen, carbon dioxide is okay, so can work. so you only check the gas test. Gas test and also permit also check.
अच्छा आपके लिए एक बार हिंदी में बोल रहा हूँ गैस टेस्ट के अलावा आप दूसरा क्या चेक करोगे कॉन्फ्रेंस स्पेस में एक आदमी काम करने जा रहा है आप दूसरा क्या चेक करोगे आंसर इंग्लिश में बोलो क्या क्या चेकिंग आप करोगे ओके मैं समझ गया आपका हाँ, क्वेश्चन इंग्लिश में बोल रहा है Actually, where is from? बांग्लादेश just checking from this but it's permit general government space permit however not yet general not meet person space permit. Just you forget about the permit. Every work required a permit. You are okay with that, okay? You are telling permit. Just leave that permit. After that, what will you do? As a standby man, you are going there. Physically what you said. Okay, just leave that. What is your role as a standby man? It's a matter role. Yeah. Check all everything gas and permit and anybody go inside not doing name or his signature and out and also need signature. Okay, Where will so you get signature? Huh? Where will you get signature? You are telling you have to get signature, right? Where will you get? Because if anybody No. Will you write in your diary? What is the? do you have any separate document to get signed? What is the document name? standby man this paper Yeah. What is that paper called? conference space Yeah. okay You are here. formal conference space entry paper. Okay, you can say it as a log sheet. Okay. So, for example, if I am inside the confined space, okay, I felt inside the confined space. What do you do? Without permission? No. I signed everything and all, but I fainted inside the confined space. Me also. Me. After no eastern confined space entry area, I will stand by. Okay, you are for example, in your area, someone signed in the entry log sheet, and he went inside. Okay, there is some presence of any toxic gas, so he fainted inside. So he collapsed inside the confined space. We call him. But he collapsed. He already fainted inside the confined Yes, space. yes. What do you do on that time? We call him. If any problem outside, I call him Problem is inside. inside. Yeah. Okay, I call another person. He's another group also. So tell me properly. Another one group have for this guy. You first tell him. How will you call that people? Huh? How will you call that another group? I will call another group. Which group? This is the one night discuss. What's name? You can't say like that, brother. This is your sole responsibility. I don't listen my response. This is the only job you need to do. You just need to watch the confined space, and if there is anything, you need to call a person. What is the name of the person who will call you? Who you will call? नंबर होता है 993 कुछ भी इमरजेंसी नंबर 1111 है, ओके? आपका नंबर मालूम हो गया 1111। अब कैसे उसको उस टाइम आप क्या करें? उसी टाइम हम लोग को इन्फॉर्म करना है अंदर में प्रॉब्लम है वो करना है। क्यों आप जाके ले सकता है ना, आप सामने ही है ना, आप जाकर उनको बाहर ले आ सकता है ना। मेरे को तो प्रॉब्लम आ जाएगा तो मैं मुश्किल है ना। ओके, वो सब अच्छा है। आप जाके कैसे इमरजेंसी ऐसे किसको बताएंगे? मोबाइल रखते हर जगह पे एरिया है, हाँ। इमरजेंसी एरिया है। अभी आप 3rd फ्लोर में, अभी नीचे मोबाइल नीचे है, आपका फ़ोन नीचे रखा होगा, आज प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा, आप कैसे आके बताएं? नीचे आके इमरजेंसी कॉल बताएगा। नीचे आके बता सकते हैं। वो आपने अंदर गिर गया, इस टाइम में बैंक तो बाहर नहीं आ सकते, किसी को बोलना है तो वो अभी लोग बोला अभी नीचे आके बताएगा। नहीं ये तो बोलो दे मैं पे समझा नहीं पे मैं बाहर जो कॉन्फ्रेंस स्पेस का हॉल है इसमें से मैं आएगा तो मुश्किल है। मैं उधर ही रुक के किसी को इन्फॉर्म करना है तो लोग इमरजेंसी में कॉल कर लोग को लेकर आने के लिए। अगर उसी टाइम वो उधर कोई नहीं है, वो लोग सब दूसरा काम पे बिजी है,
आप लेकिन हॉर्न हॉर्न है ना मेरे पास। ये चीज़ हम लोग पहले बताना। हॉर्न देगा तो मेरे पास 7 लोग आएगा, उन लोग को मैं बोला அவர் எப்படி பண்ணாருன்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ ஓரளவு வந்து இங்கிலீஷில் அவருக்கு ஓரளவு நாலேஜ் இருக்குது. பட் இன்னும் அவர் நிறைய இம்ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் வெளிநாட்டுக்கு வேலைக்கு வரீங்கன்னா கொஞ்சம் இங்கிலீஷ்லேயும் நீங்கள் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். ஓரளவு மேனேஜ் பண்ணுற அளவுக்கு இங்கிலீஷ் கற்றுக்கோங்க. ஸோ இதுதான் இந்த வீடியோவில் சொல்ல நினச்சிது. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துன்னா லைக், கமெண்ட் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி சவுதி ரிலேட்டட் வீடியோஸ், லைஃப் ஸ்டைல் vlogs எல்லாம் வேணும்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.